Hello students, this is part 8 of chapter 2, that is sexual reproduction in flowering plants. So we have talked about pollination, types of pollination. Today we will talk about agents of pollination. So mainly there are two, biotic and abiotic. In biotic you have only animals, and in abiotic you have two, wind and water. Majority of plants go for abiotic agents of pollination, and there is very small proportion, very few species which will go for animals as agents of pollination. Now you also have to understand that wind and water pollinated flowers, they will neither produce nectar nor they are colorful. Why? Because all these things are done to attract insects. Since here insects are not helping in pollination, the flower or the plant would not waste its energy in becoming colorful or producing nectar. Also, for wind and water pollinated plant, the pollen grains are produced in a large number as compared to the ovule or ovum. Why so? Because the pollen grains reaching stigma in this case is a chance factor, isn't it? Although it will be carried away by wind and water, we don't know how many would actually reach the stigma. So to compensate for this uncertainty and associated loss of pollen grain, the flowers produce enormous amount of pollen. So this can be asked as a 2 marks. Give reason. Why do wind and water pollinated flower produce large amount of pollen? Or another give reason can be, why are wind and water pollinated flowers not colorful or they don't produce nectar? Talking about wind pollination in detail, it is more common as compared to water pollination. Now, agar pollen grains को if they have to be carried away by wind, उनको कैसा होना चाहिए? So they should be very light, they should be non-sticky, isn't it? In contrast to the animal pollinated pollens which will be sticky. तो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स के पॉलन ग्रेन्स कैसे होंगे? लाइट एंड नॉन स्टिकी, सो दैट दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड बाय विंड करंट. स्टेमन कैसा होना चाहिए? वेल एक्सपोज्ड, ताकि पॉलन उसमें से ईजिली डिस्पर्स हो जाए. स्टिग्मा कैसा होना चाहिए? लार्ज एंड ऑफन दे शुड बी फैदरी, ताकि वो पॉलन ग्रेन्स को विंड में से ट्रैप कर सके. इनफ्लोरेसेंस विल सपोज ये जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स है, जैसे मैंने बोला, दे आर नॉट वेरी लार्ज, और समटाइम्स इफ द फ्लावर्स आर वेरी स्मॉल देयर वुड बी इनफ्लोरेसेंस विच विल बी हैविंग न्यूमेरस फ्लावर्स. बहुत सारे फ्लावर्स एक इनफ्लोरेसेंस में पैक्ड होंगे, एंड ईच ओवरी विल हैव अ सिंगल ओव्यूल. वी कैन स्टडी एग्जाम्पल ऑफ मेज, दैट इज कॉर्न कॉब. I have tried to show a maize plant here. हाइट थोड़ी सी कम हो गई है because I had less space. यहाँ पे देखो, I have labeled something as tassels. Next time when you go to outskirts of city and if you get to see a maize field, please observe it very closely. आप गूगल पे पिक्चर्स भी देख सकते हैं. तो ये जो मेल tassels मैंने लिखा है, these are tassels or the male plant, and these are the silk or the female plant. तो टेसल्स क्या है? वो एक्चुअली स्टेमन है जो एपेक्स, प्लांट के एपेक्स पे प्रोड्यूस होंगे, एंड दे विल हैव लार्ज नंबर ऑफ पॉलन. जब आप मकई का भुट्टा छीलते हो, जो आपने निकाल दिया वो क्या है? हस्क है. फिर अंदर दाने होते हैं मकई के, और बीच बीच में क्या होता है? कॉर्न सिल्क होता है, इजंट इट? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. वो कॉर्न सिल्क क्या है? दे आर फीमेल. एक्चुअली दिस द कॉब इज़ अ फीमेल पार्ट where the fertilization has already taken place, और वहाँ पे जो सिल्क है या लॉन्ग टेसल्स हैं, वो किस लिए हैं? so that they can wave in wind and they can capture or trap all the pollens that are present. तो फिर ये फ्लावर्स कैसे होने चाहिए? बाइसेक्सुअल होने चाहिए या यूनिसेक्सुअल होने चाहिए? ऑफ कोर्स दे आर यूनिसेक्सुअल. तो मेज का प्लांट कैसा होगा? मोनोशियस होगा. एंड बिकॉज सी द फ्लावर्स आर नॉट बाइसेक्सुअल, तो पॉलन को यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा ना,
तो what kind of pollination it would be? It would be cross pollination, that is maize plant will go for geitonogamy. Grasses are a very common example of wind pollination. Now coming to the next one, that is water pollination. Water pollination is rare. There are only 30 genera reported and most of them are monocots which will go for water pollination. We have studied fertilization earlier, not in detail but just to brush up. So algae, bryophyte and pteridophyte, they use water as the mode of transport for their male gametes and fertilization takes place in water. Talking about the species which have water pollinated flowers, so you can have fresh water and marine water. In fresh water you have Vallisneria and Hydrilla. In marine water, examples will be seagrass, and that is seagrass itself is known as Zostera. Seagrass is the common name. Now different flowers have different strategies, like for example water hyacinth and water lily. Children, I strongly recommend कि ये जितने भी names I am talking about वो सारे आप Google करके उसकी images देखिए, it would be more clear. So water hyacinth or water lily, here the flowers emerge above the level of water, and although they are growing in water, pollination is not taking place by water, it is taking place by either insect or wind. So aquatic plants like water hyacinth and water lily are insect pollinated or wind pollinated. Do remember this for your MCQs. ये जो water pollination है इसमें से बहुत सारे MCQs possible हैं. Vallisneria, it has a long stalk जिसकी वजह से flower will come and float on the surface of water. It will release lot of pollens and they will be carried away by the passive water current so that it reaches stigma. When you talk about seagrass, that is Zostera, female flowers are not seen only, they are submerged inside water. तो जो भी हो रहा है वो पानी के surface के नीचे हो रहा है. Pollen is released inside the water and it is carried passively in water. So when it has to release inside the water, travel inside the water, तो उसका shape कैसा होना चाहिए? Submarine जैसा होना चाहिए? It is actually long ribbon shaped, so that it can reach, it can float. Okay, do remember that all the pollen grains which are used for water pollination will have a mucilage covering to prevent wetting. So you can expect a lot of MCQs from this part. When we talk about animals as the pollinating agents, there are so many. Humans are also one of them. So bees, butterfly, beetle, wasp, ant, moth, birds. कौन सी birds? Sunbird and hummingbirds. Have you ever seen a sunbird leaning over a flower and trying to suck the nectar? It's a beautiful sight. I just love it. Bats also are pollinators. Primates, that is monkeys. Arboreal animals जो tree dwelling होते हैं. Example is rodents. Then reptiles, gecko lizard and garden lizard. Garden lizard क्या होता है? गुजराती में उसको बोलते हैं काचिंडो. You must have seen it in trees many times. Okay, so these are all animal pollinators. Bees are the main ones. I don't exactly remember the statement, but Einstein had said that जिस दिन bees extinct हो जाएंगे, he had given a timeline. उतने टाइमलाइन के अंदर सारे एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो जाएंगे इंक्लूडिंग ह्यूमन. कैन यू ड्रॉ अ रिलेशन कि आइंस्टाइन ने ऐसा क्यों बोला? बीस के एक्सटिंक्ट होने से ह्यूमंस क्यों ख़त्म होंगे? आई नो दैट यू ऑलरेडी नो द आंसर, बिकॉज इफ़ देर आर नो बीज देर विल बी नो पॉलिनेशन, देर विल बी नो प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स. मतलब जो विंड और वाटर पॉलिनेटेड स्पीशीज़ हैं उसका पॉलिनेशन होगा, बट जो एनिमल पॉलिनेटेड स्पीशीज़ हैं उसका पॉलिनेशन नहीं होगा. सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कंजर्व इवन द स्मॉलेस्ट स्पीशीज़ लाइक बीज. क्या कर सकते हैं इनको कंजर्व करने के लिए? वी हैव टू नोट दैट वी शुड नॉट प्रोड्यूस, वी शुड नॉट यूटिलाइज अ लॉट ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स, क्योंकि उसकी वजह से द एनिमल्स विल डाई, द इंसेक्ट्स विल डाई. बीज के बारे में और एक खास बात है स्टूडेंट्स. हैव यू सीन द शेप ऑफ द बीज? इट इज़ नॉट एरोडाइनमिकल. एरोडाइनमिकल शेप मतलब क्या होता है?
समथिंग दैट कैन कट थ्रू द करंट ऑफ विंड और वाटर, जैसे एरोप्लेन का शेप होता है, जैसे बोट का शेप होता है. आप अगर देखेंगे बम्बल बी को ठीक से, बम्बल बी इज सिलेंड्रिकल, द शेप डज नॉट सपोर्ट इट्स फ्लाइंग but it can glide very nicely, right? So ponder over the thought. Okay, coming to adaptations of insect pollinated flowers. कैसे होते हैं insect pollinated flowers? Large, colorful, अच्छी सी fragrance आती है उसमें से, they are rich in nectar. और अगर फ्लावर स्मॉल है, so there would be large number of flowers clustered together, ताकि उसका जो इन्फ्लोरेसेंस है, ग्रुप ऑफ फ्लावर है, वो बहुत ही कॉन्स्पिक्यूअस मतलब जो आसानी से स्पॉट किया जा सके, आसानी से दिख सके, वैसा होता है. पहले भी मैंने बताया कि प्लांट्स आर द ओनली स्पीशीज़ जो अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की एडवर्टाइजमेंट करते हैं, और ये एडवर्टाइजमेंट करना ज़रूरी है इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट पॉलिनेटिंग एजेंट्स, स्पेशली इंसेक्ट्स. बीज एंड फ्लाइज पॉलिनेटेड फ्लावर्स, ये एक गंदी तरह की स्मेल, an unpleasant odor is given out by them, and they also have nectar and pollen. nectar and pollen किस लिए है? अब देखो बार बार सिर्फ शक्ल देख के तो कोई अट्रैक्ट होगा नहीं, कुछ कॉन्क्रीट चाहिए ना. इफ़ यू हैव टू इंक्रीज द नंबर ऑफ विजिट्स ऑफ इंसेक्ट्स, सो nectar and pollen आर फ्लोरल रिवॉर्ड्स, जिसकी वजह से इंसेक्ट बार बार एक्सक्यूज़ मी फ्लावर पे विजिट करेंगे. जैसे ही वो फ्लावर पे आएंगे, दे विल कम इन कॉन्टैक्ट विथ एंथर, देयर बॉडी विल बी कोटेड विथ पॉलन ग्रेन, और बॉडी को चिपकने के लिए पॉलन ग्रेन्स कैसे होने चाहिए? स्टिकी होने चाहिए. एंड देन व्हेन दे विजिट अदर फ्लावर, दे ड्रॉप द पॉलन ग्रेन्स ऑन द स्टिग्मा. दिस इज़ हाउ पॉलिनेशन टेक्स प्लेस. सो फ्लावर्स को पॉलन प्रोड्यूस करना क्यों ज़रूरी है? इट इज़ फॉर इंसेक्ट्स. और वो इतने सुंदर भी क्यों दिखते हैं? वाई डू दे हैव sweet fragrance or good colors, bright colors, attractive appearance? It is not for you, it is for insects. There is a purpose for everything in nature. सिर्फ humans ही हैं जो बिना purpose के काम करते रहते हैं, as in they do activities which do not have any benefits. Now coming to floral reward, एक floral reward मैंने आपको बताया, it was नेक्टर एंड पॉलन. दूसरा फ्लोरल रिवॉर्ड क्या हो सकता है जिसकी वजह से एनिमल्स अट्रैक्ट हो फ्लावर में? इट इज़ प्रोवाइडिंग सेफ प्लेस टू ले एग्स. इसका एग्जाम्पल है एमॉर्फेफेलस. आई हाईली रिकमेंड कि आप गूगल पे जाके एमॉर्फेफेलस का इमेज देखिए, वो कैसा दिखता है. द फ्लावर इज़ 6 feet हाई. सो एमॉर्फेफेलस क्या प्रोवाइड कर रहा है इंसेक्ट्स को? प्लेस फॉर laying eggs. There is a very unique relationship between moth and yucca. Again, please go and see how yucca flowers look. So, दोनों एक दूसरे के बिना अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकते. Both of them depend on each other. क्यों? Moth deposits egg in the locule of ovary. Try to visualize. मैंने आपको डिसेक्शन करके दिखाया था. ओव्यूल्स कैसे दिखते हैं, ओवरी में कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. So that is the place where moth lays egg, and yucca in turn, by providing the place, it gets pollinated by moth. फिर क्या होगा in eggs का? They will hatch into larvae, and larvae will come out of the egg as the seed starts developing. There is a very funny example in nature, and that is pollen or nectar robbers. Now these are like your girlfriends, है ना? कितने लोगों की है जो लेक्चर सुन रहे हैं? कुछ गर्लफ्रेंड्स ऐसी होती है जो आपके साथ आएगी, मूवी देखेगी, यू विल हैव टू टेक हर टू रेस्टोरेंट, गिव हर एक्सपेंसिव गिफ्ट्स, दे विल ड्रिल होल इन योर पॉकेट्स एंड देन इट्स डन. एक दिन टाटा बाय बाय, राइट? सो दे आर लाइक पॉलन और नेक्टर रॉबर्स. क्या करेंगे ये? पॉलन और नेक्टर तो कंज्यूम कर लेंगे, लेकिन फ्री में पॉलिनेशन नहीं करेंगे. सो द फ्लावर डिड नॉट गेन एनीथिंग आउट ऑफ इट. सो दैट इज़ हाउ they are named as pollen or nectar robbers.